रॉकस्टार के गेम्स फैन फेवरेट माने जाते हैं। रॉकस्टार्स एबिलिटी टू मेक एन एक्सेप्शनल गेम एंड अ प्रोटैगनिस्ट जो लोग कभी भूल नहीं पाएंगे, वेदर दैट इज सीजे इन सैन एंड्रियास, टॉमी वर्सेटी इन वाइस सिटी, निको बेलिक इन GTA 4, फ्रैंकलिन इन GTA 5 एंड मेनी मोर। रॉकस्टार का हर एक गेम इज अ मास्टरपीस एंड एवरी सिंगल गेम डिजर्व्स इट्स ओन नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री। लेकिन रॉकस्टार का एक गेम विच इज़ क्लोजेस्ट टू माई हार्ट और मेरा पर्सनल फेवरेट गेम है, और वो आप प्रॉबेबली वीडियो पे क्लिक करते ही समझ गए होगे कौन सा गेम है। इट्स रेड डेड रिडेम्पशन 2। वीडियो का टाइटल इज़ प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि वीडियो किस बारे में है। द वीडियो इज़ एसेंशियली मी एक्सप्रेसिंग माई लव फॉर अ रिमार्केबल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ रेड डेड रिडेम्पशन 2। And after spending more than 120 hours in the world of Red Dead Redemption 2, I think अब मैं finally ready हूँ गेम के बारे में बात करने के लिए। I should also add this video does not contain any major spoilers for the story of the game. Like maybe एक दो छोटे spoilers होंगे which shouldn't really matter. They're very minor spoilers. हाँ, लेकिन अगर आपने ये गेम पहले नहीं खेला है, I advise that you avoid the comment section because probably comment section में there's going to be plenty of RDR, Arthur Morgan, John Marston stands there discussing the game in depth. तो अगर आप चाहते हो कि आपका playthrough खराब ना हो, I highly advise stay away from the comment section. क्योंकि अगर आपने कमेंट सेक्शन में कोई एक दो स्पॉइलर देख लिए देन दैट्स नॉट रियली माय फॉल्ट बिकॉज वो मैं कंट्रोल नहीं करता। नाउ दैट द डिस्क्लेमर एंड ऑल द फॉर्मेलिटीज आर डन, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ वीडियो जो मुझे इतने टाइम से बनाना था। अ वीडियो वेयर आई टॉक अबाउट माय फेवरेट गेम रेड डेड रिडेम्पशन 2। इस गेम की स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स आर द मोस्ट मेमोरेबल पार्ट ऑफ दिस गेम एंड आई थिंक इट्स ओनली फेयर दैट आई स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ रेड डेड रिडेम्पशन 2। इस गेम की स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड अ गैंग ऑफ आउटलॉज, अ गैंग ट्राइंग टू सर्वाइव एंड होपफुली एस्केप अ रैपिडली चेंजिंग अमेरिका, एन अमेरिका वेयर आउटलॉज वोंट वेलकम एनी मोर। ये है एसेंस ऑफ द स्टोरी, लेकिन जो चीज़ इस गेम के नैरेटिव को आगे पुश करती है आर द गेम्स कैरेक्टर्स and especially the gang members. Dutch Vanderlyn, the leader of the gang. How's that score you stole off us? Which one? Oh, like that. It's like I said, this is a charismatic leader. Hosea Matthews, Arthur Morgan, जो ये गेम का प्रोटैगनिस्ट है बाय द वे, जॉन मार्स्टन, हावियर एस्क्वेला, बिल विलियमसन, चार्ल्स स्मिथ, लेनी समर्स, माइका बेल, टोबी मगवायर, अंकल, सेडी एडलर, मिस ग्रिमशॉ, कैरन, टेली, मॉली, मैरीबेथ, रेवरेंड स्वॉनसन, स्ट्राउस, मिस्टर पियर्सन, एबिगेल, and finally Jack. You're old enough to start pulling your weight now. Are you being mean? Lots to do around here. Stop it! I'm sure your ma had chores at your age. I hate you, Uncle Arthur! यूजुअली वीडियो गेम्स में मेमोरेबल साइड कैरेक्टर्स होना बहुत रेयर है। 9 times out of 10 आप जब भी कोई गेम खेलते हो यू डोंट रियली रिमेंबर द साइड कैरेक्टर्स ऑफ द गेम एंड इट्स ओनली व्हेन यू रीप्ले द गेम देन आप बोलते हो अच्छा हाँ ये बंदा, हाँ मुझे अब याद आया अब क्या होता है स्टोरी में। लेकिन क्या मैं यही सेम चीज़ रेड डेड के बारे में बोल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। I can tell you something memorable of all the gang members, all 22 of them, and some more additional side characters like Mary O. Arthur Linton, Mrs. Downs, Hosea Trelawney, and many more. और ये सब is a huge compliment to the writers of this game. Rockstar Games की writing has always been a weak point for them, और इसका सबसे best example आपको मिलेगा GTA 5 में, when they randomly kill a fan favorite character which just leaves the audience more confused than shocked. और Red Dead Redemption 2 भी कोई ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है इस रूल का। द राइटिंग ऑफ Red Dead Redemption 2 इज़ फिनोमिनल टिल इट इजंट। इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और इस गेम की राइटिंग की वजह से मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ दैट द स्टोरी ऑफ GTA 6 इज प्रॉबेबली गोइंग टू बी द बेस्ट स्टोरी इन द एंटायर GTA सीरीज, बेटर देन 4 100%। लेकिन क्या Red Dead जितने आइकॉनिक कैरेक्टर्स होंगे GTA 6 में? आई हाईली डाउट इट। आपके ये गेम खेलते टाइम एवरी गैंग मेंबर हैज़ अ मेमोरेबल मोमेंट जो प्लेयर कभी भूल नहीं पाएगा, और इसका दूसरा मेजर रीज़न है द कैंप और द हाइड आउट और योर सेफ हाउस इफ़ यू लाइक GTA a lot, जहाँ पे सारे गैंग मेंबर्स साथ में रहते हैं। एंड जस्ट लाइक ह्यूमंस हू शेयर ए लिविंग स्पेस विद ईच अदर, आप कई बार गैंग मेंबर्स को कैंप में नोटिस करोगे हंसी मजाक करते हुए, पार्टी करते हुए, लड़ते हुए, गेम्स खेलते हुए, गाना गाते हुए।
और ये सारे इवेंट्स हेल्प यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच गैंग मेंबर। लाइक मुझे नहीं पता था आर्थर मॉर्गन के साथ आप डांस भी कर सकते हो कैंप में। और दूसरा रीज़न, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न, इज़ द फिनोमिनल एक्टिंग एंड वॉइस एक्टिंग इन दिस गेम। इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। इट ब्रिंग्स लाइफ टू ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स इन दिस गेम। Benny? Benny, where are you? Why ain't you never married? Don't have me. And we each got $15. Oh, and a quarter. Don't forget the quarter. Shut up, Arthur. आई एम प्रीटी श्योर आप सब जो ये वीडियो देख रहे हो नो व्हाट GTA इज। GTA इज मेड बाय रॉकस्टार। रेड डेड रिडेम्पशन इज ऑल्सो मेड बाय रॉकस्टार। सो अगर एकदम बेयर बोन्स डेफिनेशन चाहिए कि रेड डेड रिडेम्पशन किस बारे में है, इट्स जस्ट GTA set 200 years back. And the cars are replaced by horses. And also Hisoyam doesn't work. आई थिंक एक मेजर डिफरेंस जो आपको फील होगा रेड डेड खेलने में व्हेन कंपेयर टू अदर GTA गेम्स इज द पेसिंग ऑफ दिस गेम। रेड डेड बहुत ही स्लो पेस्ड गेम है। सो अगर आप ये गेम खेलने आ रहे हो आफ्टर 1000 hours इन वैलोरेंट, नो वंडर आपको लगेगा कि दिस गेम इज स्लो एज फक। आई मीन शिलोंग पे पीक कर करके दिमाग खराब कर लोगे खुद का तो क्या ही अच्छा लगेगा नहीं। आप ये गेम खेलते हो एज आर्थर मॉर्गन, जिसे मैं डिस्कस करूंगा वीडियो में आगे। कंट्रोलिंग आर्थर फील्स वेरी हैवी एंड स्लो, और ये डेवलपर्स ने इंटेंशनली ऐसा किया है। दिस गेम इज नॉट डिजाइंड टू बी रश्ड थ्रू। ये एक ऐसा गेम है विच यू शुड प्ले स्लो एंड सेवर एवरीथिंग दैट दिस गेम हैज टू ऑफर। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई थिंक मेरे हिसाब से द बेस्ट वे टू एक्सपीरियंस प्लेइंग रेड डेड रिडेम्पशन 2 इज़ लाइक जब आप ऑफिस से आ रहे हो या कॉलेज से आ रहे हो, थके आ रहे हो एंड यू जस्ट पुट दिस गेम ऑन एंड गेट लॉस्ट इन इट्स वर्ल्ड फॉर लाइक 2-3 hours। तब आप जब ये गेम खेलते हो ना, दैट्स द आइडियल वे टू प्ले रेड डेड रिडेम्पशन 2। आपको बहुत मज़ा आएगा तब रेड डेड खेलने में, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड दैट यूल बी लॉस्ट इन फॉर आवर्स। और यू कैन जस्ट प्ले द गेम आफ्टर लूजिंग योर रैंक्ड गेम्स, जो मैंने किया था। बट आइडियली अगर मेरे पास वो ऑप्शन होता पहला वाला तो मैं वैसे ही गेम खेलता, लेकिन यू नो आई प्लेड इट आफ्टर लूजिंग रैंक्ड मैचेस इन वैलोरेंट, बट दैट्स जस्ट मी। There's a झाड़ू in the background. There's a झाड़ू in the background. Red Dead का गेम प्ले is very similar to GTA का गेम प्ले। You know the classic, go here on the map, this is where the story will progress, buy guns from ammunition, clothes from Binko and Pro Labs, जो मुझे कहना पड़ेगा is much more in depth than any GTA game. Rob people, stores, banks, trains and all that. हाँ, लेकिन एक feature which is unique to Red Dead Redemption is the feature to talk to NPCs. Yes, I know ये फीचर सैन एंड्रियास में भी था, लेकिन उतना पॉलिश्ड नहीं था जितना रेड डेड रिडेम्पशन में है। आपके पास ऑप्शन होता है टू ग्रीट पीपल, मतलब उनसे अच्छे से बात करने का ऑप्शन होता है, और यू कैन जस्ट एंटागनाइज द NPC। उन्हें चिढ़ा सकते हो, उनका मजाक उड़ा सकते हो। सो देयर इज दिस ग्रेट मैकेनिज्म इन दिस गेम विच इज़ अ लॉट ऑफ फन, एंड जितने भी लोग रेड डेड की कम्युनिटी में, वी जस्ट कॉल इट ग्रीट एंटागनाइज, एंड इट्स हिलेरियस। Hey there, mister. Hello. That's a fine horse you got there. Thank you. How long you been married? Hello. Good to see someone who ain't afraid of hard work. If only they paid us to sit around. You sure don't look like you'd get very far on your wits. Hey there, partner. Hey there, fella. Decent town you got here. Really now? And nice to meet the village idiot. Why don't you shut your trap? अब आप पूछोगे आर्यन कैन आई गो ऑन अ क्रेजी रैम्पेज एंड अ किलिंग स्प्री लाइक आई डिड इन GTA, और मेरा जवाब होगा ऑफ कोर्स यू कैन। इट इज़ अ रॉकस्टार गेम आफ्टर ऑल। आई मीन इट कम्स विद इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेज। आप पे फिर बाउंटी लग जाती है एंड बाउंटी हंटर्स आपको हंट करना शुरू कर देते हैं। द हायर द बाउंटी द स्ट्रॉन्गर द बाउंटी हंटर्स, और बाउंटी तब तक नहीं हटती जब तक यू गो इन अ स्टेशन एंड पे इट ऑफ। और दूसरा मेजर कॉन्सिक्वेंस है आपका ऑनर बार। एसेंशियली इट्स अ गुड काउबॉय और अ बैड काउबॉय मीटर। और मेरी बात मानो, यू डोंट वांट टू अंडर एस्टिमेट ऑनर, बिकॉज योर ऑनर प्लेज अ मेजर रोल इन द स्टोरी ऑफ दिस गेम। You better have a damn good reason for being here. Okay.
एंड प्लस द हायर द ऑनर उतने ही अच्छे से आपके साथ एनपीसीज बिहेव करेंगे विलेज में या टाउन में. एंड फिर ओपन वर्ल्ड इवेंट्स में देयर इज बाउंटी हंटिंग विच इज़ अ लॉट ऑफ फन बिकॉज आपको इस गेम का प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिज्म्स यूज़ करने मिलता है, वो है द लैसो रोप. और फिर बहुत सारे मिनी गेम्स भी हैं जो आप खेल सकते हो. लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है इस गेम की, वो है इस गेम का गोर. इट्स जस्ट अमेजिंग. इट मेक्स यूजिंग एक्सप्लोजिव्स एंड शॉटगन्स so much more fun and enjoyable. Now, am I crazy to say that I love violence, blood and gore, or have I just watched one too many Quentin Tarantino movies? I really don't know. But man, the gore in this game is amazing. आपको ये गेम खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ऐसा कोई भी मिशन नहीं आएगा जिसमें आप अटक जाओगे. आई मीन लाइक रॉकस्टार लिटरली एम्स द गन फॉर यू और आप अपना घोड़ा कंट्रोल कर सकते हो एक बटन होल्ड करके. आई मीन द गेम प्रैक्टिकली प्लेज इट सेल्फ. आपको बस गेम ऑन करने की ज़रूरत है. लेकिन इस गेम का म्यूजिक विच इज़ सो फकिंग गुड एंड आई विश आई कुड यूज़ इट बट इट्स कॉपीराइटेड एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. द म्यूजिक ऑफ दिस गेम रियली ब्रिंग्स द गेम टू लाइफ. लाइक द गन फाइट्स दैट यू गो इन, जस्ट उनकी क्वालिटी इंक्रीजेस 2 to 3 times मोर जस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूजिक. लाइक मुझे याद है द फर्स्ट टाइम जब मैं ऐसे गेम खेल रहा था एंड देन ड्यूरिंग दैट फर्स्ट गन फाइट वाला मिशन व्हेन द म्यूजिक किक्स इन, इट्स जस्ट सच अ अमेजिंग एंड अ सरियल एक्सपीरियंस. It's goddamn. It's a exceptional game, isn't it? Red Dead Redemption 2. Man, I love this game. Rockstar are the masters of the open world genre and the world that they create for their games, भले ही वो Vice City हो या Liberty City हो या Los Santos हो. The world design is incredible and massive in scale. लेकिन एक मेजर इशू जो मुझे हमेशा से बॉदर करता था रॉकस्टार के ओपन वर्ल्ड गेम्स के बारे में इज़ द लैक ऑफ डेप्थ. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है GTA 5. ब्यूटिफुल मैसिव वर्ल्ड विद सेवरल पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट. लेकिन मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो आप लॉस सैंटोस में देखते हो आर नॉट इंटरैक्टेबल. वो बस सारे एक विजुअल ट्रीट की तरह माने जाते हैं फॉर द प्लेयर. इट्स जस्ट फैसिनेटिंग टू लुक एट, लेकिन द मोमेंट द प्लेयर वॉन्ट्स टू इंटरैक्ट विद दैट स्ट्रक्चर, दैट्स व्हेन द इल्यूजन ब्रेक्स अवे. और इसी लैक ऑफ इंटरैक्शन की वजह से द ओपन वर्ल्ड ऑफ रॉकस्टार गेम्स दो इम्प्रेसिव, इट्स शैलो. उसमें डेप्थ नहीं है. सो क्या यही सेम प्रॉब्लम रेड डेड रिडेम्पशन 2 को भी प्लेग करती है? नॉट क्वाइट. आप सारी बिल्डिंग्स तो एंटर नहीं कर सकते until and unless you download a mod, but you can enter a lot of them. Oh, get the hell out of here, will you? Sorry, wrong room. आई थिंक जिससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आई प्रोवाइड सम कॉन्टेक्स्ट. इस गेम का बजट अलोन वॉज $300 to $350 million. अगर आपको थोड़ा और रिलेटेबल कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो उतने ही पैसों में आप काल्की बना सकते हो 4 बार. And the budget of Kalki was 650 crores. Oh, that certainly sounds like a lot of money, doesn't it? Coming back to Red Dead Redemption 2, isn't it the prettiest game you have ever seen? The world is incredibly beautiful. और graphics के मामले में I don't think there is any studio that can compete with Rockstar. Their games are always a graphical benchmark and Red Dead Redemption 2 is no exception. The weather cycle of this game is amazing and it's fascinating to see how the world changes around it. इस गेम का वर्ल्ड इतना सुंदर है that you cannot help but stop and take photos. हाँ, the game is set in 1899 and the majority of the map is just wilderness. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि open world इस गेम का is just empty. I have to say, exploring the world of Red Dead Redemption 2 is an experience by itself. There are so many mysteries to solve, interesting places to visit. आप कोई abandoned village या घर spot करते हो, you can spend your time figuring out about what happened here. और traversal करते time you will meet a lot of strangers, robbers, people looking for help, and sometimes a lot of funny accidents as well. Poor thing. Come here. Okay. Hey! Need a hand with your horse?
While exploring the world of Red Dead Redemption 2, अगर आपको आपके मैप पे एक क्वेश्चन मार्क दिखता है, I highly recommend that you go to the question mark because there is a lot of great content put behind it and you might rob yourself of a beautiful story. Listen, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ because अगर आप ये डिसाइड करते हो गेम खेलने के लिए ये वीडियो देखने के बाद, I want your first playthrough to be exceptional because जो first playthrough होता है ना कोई गेम का, that's the playthrough जो प्लेयर हमेशा याद रखेगा for the rest of your life. So I want that first playthrough to be very memorable. That's all. Now that the vast open wilderness is done, let's talk about something small and microscopic. Let's talk about the interiors of Red Dead Redemption 2. So how do the interiors look in Red Dead Redemption 2? Welcome, friend. Sir? This here. That's right. Burn this dump to the ground. This game is just way too beautiful. Walking into a bar or a saloon or a hotel, the attention to detail on छोटी सी छोटी चीज़ पे is unreal. आप लोगों को पोकर खेलते हुए देखते हो, पियानो प्ले करते हुए देखते हो. अगर आप बार में हो तो you can start a bar fight. लेकिन एक चीज़ जिसको लोग ज़्यादा क्रेडिट नहीं देते इस गेम में is the lighting of this game. Whether that is in the interiors or outside. The lighting of this game makes the world so much more beautiful. Like Rockstar की जो भी टीम ने इस गेम की लाइटिंग पे काम किया है ना, I have a huge crush on them. कितने बार गेम खेलते टाइम like during night time I just ride around Saint Denis because it's just that beautiful. और ये फीचर सिर्फ Saint Denis तक exclusive नहीं है. Even if you go to smaller towns like Valentine or Strawberry, you'll catch yourself walking in that town just taking in the scenes whether that's daytime or night time because इस गेम का open world is just simply that much captivating. I would also like to give compliment to इस गेम के hunting and fishing system को. Maybe not fishing so much but definitely hunting. It's the most polished hunting system that I've seen in an open world game जो definitely inspired है Far Cry games से. मतलब Far Cry games की hunting was much more funny because उसमें आप C4 use करके animals को hunt कर सकते थे. Hunting is actually meaningful and worth it in Red Dead. Not only does it increase your HP, you can use the meat to cook food and the animal skin for clothing. You can also hunt legendary animals to craft even more quality clothing. The amount of beautiful sceneries या cinematic set pieces Red Dead के पास offer करने के लिए है is just insanely high. And if Red Dead Redemption 2 इतना अच्छा दिखता है, I cannot help but wonder GTA 6 कितना अच्छा लगेगा. I cannot wait to play that game. वेल टेक्निकली ये पार्ट प्रीवियस चैप्टर का एक सब चैप्टर हो सकता था लेकिन आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट द लिटिल थिंग्स ऑफ रेड डेड रिडेम्पशन 2 बिकॉज अगर डेवलपर्स ने इतनी मेहनत की है इतनी छोटी सी छोटी चीज़ पे इट्स ओनली फेयर दैट आई ऑल्सो टॉक अबाउट देम. अब आप सोच रहे होगे इज दिस द चैप्टर वेयर आर्यन टॉक्स अबाउट द हॉर्सेस टेस्टिकल वाला लिटिल डिटेल? नो, ये वाला चैप्टर इज अबाउट द अटेंशन टू डिटेल्स इन रेड डेड्स वर्ल्ड. एंड yes, I'll start the video by talking about the horse's testicle wala fact. Did you guys know the horse's testicles expand and contract according to the weather? So अब आप समझ गए होगे what I mean by little things because these little things are the things that help you get immersed in the giant and massive open world of Red Dead. And I think सबसे best part जिसके साथ मुझे ये chapter start करना चाहिए is with Arthur's journal. I won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. I just want a peek in that journal of yours. The mind boggles. Not a chance. Arthur's journal is beautiful. उसमें इतनी सुंदर drawings हैं and Arthur writes down his feelings and thoughts about the events that are taking place in the story of the game. And also a moment of appreciation for the handwriting of Arthur would have easily defeated all the girls in my school in a handwriting competition. Yeah, that's right, Aditi from 2nd standard. Fuck you for bullying me along with your girlfriends for my handwriting. And guess what? अच्छी handwriting होने का मतलब ये नहीं कि आप कोई special student हो. Even though you're going to graduate from IIT this year and I'm doing this. So jokes on me, fuck off. Anyways, Arthur's journal really helps you understand him and you also learn a lot of interesting stuff. Like Arthur would have married Abigail. Like, oh, who's spilling the tea on the camp, yeah?
The detailing in the shopping catalog of different stores, like इस game की shopping catalog has more details and art than I've seen in some AAA games. And it's the same with the newspapers जो actually track करते हैं game के events को. Even the wanted and the bounty hunting posters are also so well crafted. The collectibles in this game are so pretty, and of course मैं cigarette cards की बात कर रहा हूँ. And there is also one very cool mission around these cigarette cards, so I highly recommend collecting them. There are also many treasure maps scattered across the world, लेकिन मैं कभी ढूंढ नहीं पाया because I'm dumb. मतलब समझ जाओ कि this game is insanely detailed. When you can make a food review जो millions of लोग देखते हैं, and you can watch NPCs actually eat the food. So there you go. आपके पास सारे tools हैं to start a good Instagram food vlogging account around Red Dead Redemption 2. So go knock yourself out. एक और बहुत अच्छा फीचर जो मैं ऐड करना भूल गया is that इस गेम का melee combat is so much better than the previous Rockstar games. पहले के Rockstar games में the melee combat sucks so much. Like GTA 5 का melee combat was painful to say the least. Since 40 to 50% of this game is riding your horse from one point to another, thank God the horse controls are so amazing and easy. Because if the horse controls were like Roach, I would have stopped playing this game a long time ago. वैसे तो कहने के लिए Red Dead Redemption 2 is an open world game, but the game can turn into a very creepy and a horror game when it wants to, so make sure you explore the world well because there is a lot of creepy stuff out there. We still got each other, ain't that right, honey pie? And we still know how to have a hog killing time. इस वीडियो के लिए रिसर्च करते टाइम मैंने इतने सारे शॉर्ट्स एंड वीडियोस देखे कवरिंग द टाइनीएस्ट डिटेल्स ऑफ दिस गेम्स मैसिव वर्ल्ड. इट्स जस्ट अमेजिंग एंड एज अ डेवलपर जिसने प्रॉबेबली घंटों स्पेंड किए होंगे इतने टाइनीएस्ट डिटेल को पॉलिश करते हुए थिंकिंग कि ये चीज़ तो कोई नहीं देखेगा, इट मस्ट फील सो वैलिडेटिंग. ये वीडियो गेम इज़ नॉट परफेक्ट बाई एनी मीन्स. आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा गेम है विच इज़ परफेक्ट ऑन एवरी स्केल. दिस गेम हैज़ इट्स ओन फ्लॉज जो मैंने एक्चुअली पता है स्क्रिप्ट में लिखे भी थे, बट आई डिसाइडेड टू नॉट टॉक अबाउट देम बिकॉज जब 90 to 95% ऑफ द वीडियो इज जस्ट लाइक अ विक्ट्री लैप और अ सेलिब्रेशन ऑफ वॉट ए रिमार्केबल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर और अ गेम Red Dead Redemption 2 इज़, तो फ्लॉज के बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं हुआ. और बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं हैव प्रॉबेबली नेवर प्लेड द गेम बिफोर, सो फ्लॉज के बारे में बात करना या स्पॉइलर के बारे में बात करना विल रूइन देयर फर्स्ट प्ले थ्रू एक्सपीरियंस जो मैं चाहता नहीं हूँ. सो दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई दिस वीडियो डजंट हैव एनी स्पॉयलर्स एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्लॉज. और अगर आपने गेम खेला है देन यू नो दिस गेम इज़ नॉट परफेक्ट बाय एनी मीन्स. लेकिन यू नो व्हाट इज़ परफेक्ट दो? इस गेम का प्रोटैगनिस्ट. यप, आई वाज सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट. I don't think मैं गलत बोल रहा हूँ when I say that Arthur Morgan is the greatest video game character of all time. Like the reason why I call Red Dead Redemption 2 one of my favorite games is because of the story arc of this man. Red Dead Redemption 2 is the perfect example of when a video game transcends being a video game and attains something that a movie or a book could never dream to achieve. I mean ऐसा कोई competition नहीं है, but I don't think audience Arthur से अच्छे से connect कर पाती if it were a character in a movie or a book. You inhabit Arthur and experience everything that he's going through for more than 50 to 60 hours of the game. So no wonder by the end of the story you feel connected to Arthur Morgan. And again, I have to compliment the balls on the writers for this game. They were like, हाँ हमें पता है you guys loved playing RDR1 as John Marston and probably can't wait to play as him in Red Dead Redemption 2. Yeah, we're not gonna do that. Instead, you're gonna play Red Dead Redemption 2 as a character we created for this game. All the while, John आपके आसपास रहेगा कैंप में, but you won't get to play as him. Arthur? Come on, I thought we were friends. Yes, hello? I'm only joking with you. Is that your idea of a sense of humor? तो आपको एज अ प्लेयर थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव या बाईस्टैंडर पर्सपेक्टिव मिलेगा जॉन की स्टोरी के बारे में.
लाइक ये स्टंट पुल ऑफ करने के लिए रॉकस्टार को पता था दे रियली हैव टू सेल आर्थर मॉर्गन टू द ऑडियंस एंड मैन डिड दे पास दैट मिशन easily बिकॉज आई fucking लव आर्थर मॉर्गन. I also must give credit to Roger Clark for bringing Arthur to life. हाँ मुझे पता है मैंने पहले ही कह दिया था कि इस गेम की एक्टिंग एंड वॉइस एक्टिंग इज़ फिनोमिनल, लेकिन स्पेशल मेंशन टू रॉजर क्लार्क. क्या परफॉर्मेंस है, माइंड ब्लोइंग. Arthur Morgan is such a likable character. He's funny and he's got great jokes. They got Micah and the sheriffs in Strawberry, and there's talk of hanging them. Here's hoping. Arthur, what? But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. He shares a great relationship with John Marston. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. For you. That is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है आर्थर मॉर्गन की वो है हाउ ही कैन गो फ्रॉम बीइंग अ वेरी चार्मिंग गाय टू अ वेरी इंटिमिडेटिंग एंड अ स्कैरी गाय लाइक दैट. You can't stand there. What, in the street? Yes, in the street. Is it your street? Just get out of here. Why? I said, just get out of here. Listen, partner. I'm waiting on the lady. She's a fine lady. She's just gone inside. If I wasn't waiting on this lady, you'd be dead already. But if you continue to irritate me, I'll kill you. And make my apologies to the lady. It's your call. एज आप गेम में प्रोग्रेस करते जाते हो आप आर्थर के बारे में बहुत कुछ सीखते हो, जैसे आर्थर के सिचुएशनशिप के बारे में, हिज लविंग साइड, हिज केयरिंग साइड, हिज एंग्री साइड, एंड जब तक गेम का एंड आता है यू हैव प्रोबेबली फॉलन इन लव विद आर्थर मॉर्गन. और आई थिंक इसका पूरा क्रेडिट गोज टू द राइटर्स एंड रॉजर क्लार्क. टू मेक द ऑडियंस फॉल इन लव विद अ बंच ऑफ पिक्सल्स एंड अ लाइन ऑफ कोड रिक्वायर्स टैलेंट एंड स्किल. एंड आई थिंक ये मेरा फाइनल एंड द बिगेस्ट रीज़न है. The only reason I think you need to play this game is to experience the beautiful story of Arthur Morgan. You know, nothing means more to me than this gang. The bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it. I would happily die for it. I love you, Arthur Morgan. I love you. Hey, Arthur. Good to see you. Why? You want rescuing again, do you? You're. Oh, you'll never change. I know that. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Sometimes the correct path, the bravest path, is the least obvious, and also the gentlest. Aside from my Jake, you're the best man I've known. Shame on you. He's just a goddamn boy! I still don't believe in nothing. Often, neither do I. Huh? But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid.